Hello everyone, welcome to Analyst IAS. So, in the editorial of the day series, today we are going to discuss the article In Pandemic Shock Critical Lessons for MSMEs. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper. Although there are 4 articles given on the editorial page, but today the most UPSC relevant article among them is only this, that is about MSME. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Crash course for Mains 2022 are about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. So now let's start the discussion. So in this article, author has talked about impact of pandemic on MSMEs, and even after having so many bad impacts, what kind of good things happen and what should be planned ahead, and what has been said about MSME in the budget. So basically we are going to discuss all these 4 points. So author has said that micro, small and medium enterprises MSMEs are critical for achieving the overall objective of economic development. The sector is a significant contributor in terms of industrial output, employment generation, and the share in gross domestic product and export. But despite many initiatives by government since independence, this sector has been facing challenges in its quest for survival and growth. The COVID-19 pandemic has further exposed the vulnerability of the MSME sector. During the pandemic, this sector was among the worst hit on account of the demand and supply shocks caused and the measures taken later to curb the spread of infection. This sector is still struggling to survive and recover from the pandemic-induced shocks. It means कि MSME सेक्टर का इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी एंड एक्सपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। और सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ये सेक्टर बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। और कोविड-19 पैंडेमिक में तो इस सेक्टर की स्थिति और भी खराब हो गई है और यह सेक्टर अभी भी पैंडेमिक से हुए नुकसान से उभरने की कोशिश लगातार कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट impact of pandemic on MSMEs. Let us focus on the impact of COVID-19 on MSMEs. A recent study by the writers as a primary survey of 225 small firms located in the National Capital Region, NCR and Uttarakhand observed that the turnover of around 90% of small firms had declined in financial year 2020-2021. Around 53% of firms faced more than a 50% decline in their turnover. Around 29% of firms reported a collapse of their businesses. Around 53% observed a decrease in demand, while around 36% faced erratic supply of raw materials. The main reason for a fall in turnover included restrictions on economic activities and mobilities, decrease in demand, shortage of raw materials, restriction on trade, slow recovery of markets, payment delays, and labor shortage, among others. These firms faced a 25% reduction in their employment, particularly in the informal workers segment that stood at around 47%. Major challenges faced by firms in their revival included delayed payment issues, reduced demands, a lack of financial resources, supply chain disruption, increased cost of production, lack of skilled workers, and most importantly, business uncertainties. Although most of the firms were aware about the initiatives under the Atmanirbhar Bharat package, only half of them found it to be of any help. Given the lack of demand and business uncertainties, firms did not find it rational to avail of financial assistance available under the Atmanirbhar Bharat package. A majority of firms suggested that the government should have been more focused on creating a revival of demand for products and services. It means कि एक recent study हुई है जिसमें basically NCR and उत्तराखंड रीजन की 225 स्मॉल फर्म्स पर एक सर्वे किया गया है, जिसमें से हमारे सामने एक डेटा सामने आया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में 90% स्मॉल फर्म्स का टर्नओवर डिक्लाइन हुआ है। अराउंड 53% फर्म्स ने 50% से ज़्यादा का डिक्लाइन अपने टर्नओवर में देखा है।
और 29% फर्म्स का बिजनेस ही कलेप्स हो गया है और 53% ने ऑब्जर्व किया कि डिमांड बहुत कम है एंड 36% ने रॉ मटेरियल की इरेक्टिक सप्लाई यानी कि इरेगुलर सप्लाई को फेस किया है। टर्नओवर के कम होने के बहुत सारे मेजर रीजन थे, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लग गए थे, डिमांड डिक्रीज हो गई थी, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन थे, पेमेंट डिले हो रही थी, लेबर की शॉर्टेज। तो ऐसे तमाम कारण थे टर्नओवर कम होने के पीछे। बहुत सारी फर्म्स ने एम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन फेस किया। जो इनफॉर्मल वर्कर्स का सेगमेंट कभी 47% तक रहता था, उसमें भी 25% तक गिरावट आई। हालांकि अधिकतर फर्म्स को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर चलाए गए इनिशिएटिव्स की जानकारी थी, लेकिन ओनली हाफ ऑफ देम को ही कुछ मदद मिल पाई होगी। मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स ने ये सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। So now let's talk about that after having so many bad impacts, what kind of good things have happened. Nevertheless, not all firms have suffered due to the pandemic-induced recession. Around 10% of firms under the study had either a rise in their turnover or reported no change. The key sectors these firms operated in included human health activities, manufacture of pharmaceuticals, medicinal, chemical and botanical products, food service activities, and manufacture of apparels, etc. The owners of these firms also reported that they tried to quickly adapt to the use of e-commerce platform and even switch to other business activities that had demand, like production of masks, sanitizers, home delivery of products, etc. They exploited the opportunity using their own saving to invest in the areas that offered new opportunities. This highlights that a firm's resilience depends upon its financial resources and ability to invest in new technologies or new business opportunities. The firms that suffered, unlike the large firms, lacked financial planning for business uncertainties in order to overcome vulnerable shocks. It means कि सारी फर्म्स ने पैंडेमिक में सफ़र नहीं किया। स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि अराउंड 10% फर्म्स के टर्नओवर में कुछ इजाफा हुआ है और यह हमेशा जितना टर्नओवर भी रहा है। और ये फर्म्स बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटीज़, मेडिसिनल, केमिकल एंड बोटैनिकल प्रोडक्ट्स, फूड जैसे सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इन सब फर्म्स के ओनर्स ने ये भी कहा कि उन्होंने वक्त की ज़रूरत को देखते हुए कैसे खुद को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर स्विच किया और इवन नए बिजनेस मॉडल्स लाइक प्रोडक्शन ऑफ मास्क, सैनिटाइजर एंड होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स पर भी स्विच किया है। Next, let's see what should we plan ahead. COVID-19 is neither the first pandemic nor it is going to be the last. Even during the first 2 decades of this century, the world went through some other pandemics like SARS in 2002 and 4, H1N1 influenza in 2009, swine flu infection in 2009, MERS in 2012, and the Zika virus in 2015-16. COVID-19 has been the worst among them. Apart from the pandemic, there were also other factors such as sudden change in government policies, wars, and natural catastrophes such as floods and droughts, etc., which caused business uncertainties and affected small businesses. Further, the bulk of MSMEs are in the informal sector, which lack registration and necessary financial documents to avail such benefits. These firms are at great risk of shutting down after a large-scale disaster or economic shock. Therefore, there is a need to develop a mechanism for MSMEs, which should help rescue them from shutting down and support them's revival during business uncertainties caused by economic shocks. It means कि कोविड-19 ना तो दुनिया पर पड़ने वाला पहला पैंडेमिक है और ना ही आखिरी। इवन पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक फेस किए हैं दुनिया ने। हालांकि कोविड-19 इन सब में सबसे ज़्यादा वर्स्ट था, लेकिन कोविड-19 के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी थे जिससे स्मॉल बिजनेस को नुकसान हुआ है, जैसे सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, वॉर, फ्लड, ड्रॉट्स एटसेट्रा। इतना बड़ा डिजास्टर और इकोनॉमिक शॉक लगने के बाद ये फर्म्स अब बंद होने के कगार पर आ गई हैं। तो इसलिए एमएसएमई के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है ताकि इन फर्म्स को बंद होने से बचाया जा सके। In order to make the MSME sector resilient, we propose the provision of emergency funds for small businesses that should be made mandatory from the beginning. Similar to the Public Provident Fund, the government can initiate
what is called an Uncertainty Corps Fund for small businesses. This fund can be used to meet the financial needs of small firms during business uncertainties. It may be linked with the turnover of firms. A firm could maintain a certain fraction of its turnover to meet the needs of this fund. Although it would be a forced saving, it would still be very useful for MSME during business uncertainties caused by economic shocks. The government should encourage small firms by assuring them a lucrative return on the investment through this fund. Further, the government may also contribute to the COPS fund as a fraction of the contribution of MSMEs for firms up to certain limit of turnover. इट मीन्स कि एमएसएमई सेक्टर को रिजिलियंट बनाए रखने के लिए हमें स्मॉल बिजनेस के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए. गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही एक फंड अनसर्टेनिटी कॉप्स फंड फॉर स्मॉल बिजनेसेस बनाए और फिर बिजनेस अनसर्टेनिटीज में इस फंड का यूज किया जा सके. इसके लिए फर्म खुद भी अपना फंड बना सकती है जिससे कि वो अपने टर्नओवर का स्पेसिफिक अमाउंट साइड में रख सकती है फॉर इमरजेंसी. Another measures can be small business insurance scheme which can be similar to term insurance. There are lessons to be learned from the crop insurance scheme as there are more than 6.4 million MSMEs in the country. There is a huge market potential for the insurance sector. In order to encourage firms to invest in such an insurance scheme, the government may pay an initial premium or a fraction of the premium on behalf of such enterprises, particularly micro enterprises and unaccount enterprises. It means कि स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा सकती है जो कि टर्म इंश्योरेंस की तरह हो और ऐसी स्कीम्स को प्रॉपरली फ्रेम किया जाना चाहिए. और ऐसे इंश्योरेंस स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशियल प्रीमियर या एक फ्रैक्शन ऑफ प्रीमियर पे करना चाहिए. एंड लास्टली हम देखते हैं कि व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट एमएसएमई इन द बजट. Although Budget 2022-23 seeks to lay a foundation and a blueprint to steer the economy over the next 25 years, it has failed to bring any plan ideas that makes the MSME sector resilient. The proposed financial measure suggested above, namely an uncertainty corps fund for small businesses and small business insurance scheme, can help MSME become resilient and sustain their growth during business uncertainties caused by economic shocks. It could enable small firms to meet their working capital requirements, in particular retaining their workforce and investing in new technology or new business opportunity to cope with uncertainties. In terms of planning, MSMEs can be on a par with large firms. It would boost the confidence of small firms during normal business times and make them more competitive by giving them a sense of security in time of an abnormal business cycle. It would also be of great help to the government in a time of crisis as the government can focus on addressing demand issues, which is one of the biggest challenges faced by an economy during a shock. It means हालांकि 2022-23 के बजट में नेक्स्ट 25 ईयर्स में इकोनॉमी को आगे ले जाने का फाउंडेशन एंड ब्लूप्रिंट है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने का इसमें कोई प्लान और आइडिया नहीं दिया गया है. ऊपर जो हमने कुछ मेजर्स पढ़े थे लाइक अनसर्टेनिटी कॉप्स फंड फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम आदि से एमएसएमई सेक्टर को बिजनेस अनसर्टेनिटीज में बहुत बेनिफिट हो सकता है. सो वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट आर्टिकल about the condition of MSMEs in COVID-19 pandemic. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to our channel. Stay connected for more such important videos. Thank you.